Hi guys, thank you so much for joining me. Sammohit, Sledge, Saifan, and Frenzzy. Am I Hello, hello. pronouncing everything right? I want to start off because I actually grew up in New York before moving to Toronto. So hip hop, of course, is born from Bronx in New York, and hip hop is a subculture. जैसे बोलते हैं कि hip hop सिर्फ एक musical genre नहीं है, एक subculture है. People are attached to Hmm. that subculture Yeah. in Bronx. How do you make sure that you remain true to that identity, the real subculture that it was, but also infuse your own identities? I think you're based in Mumbai. How do you make sure you infuse your own identities into it, but remain true to the actual subculture? अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, सो दे स्टार्टेड यूजिंग रैप एज अ वेपन कि हम लोग बोल पाए, उन लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच उन लोगों को मिला. सो वैसे ही हम लोग भी वही ट्राई करते कि हम लोग अपने एक्सप्रेशन जो हम लोग फील करते हैं उसको हम लोग रॉ रखे, रियल रखे जब भी हम लोग रैप करते, बिकॉज हिप हॉप इज अ कल्चर जो हम लोग जीते, मतलब जैसा हम लोग जीते वही हिप हॉप है. दैट्स व्हाट इज हिप हॉप, व्हाट वी लिव फॉर मी. और सब लोग अपने लिए अलग अलग सोचते हैं कि हिप हॉप सबके लिए अलग अलग चीज है. सो फॉर मी इज लाइक हिप हॉप व्हाट आई एम लिविंग इज व्हाट हिप हॉप मेरे लिए. सो जब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जब वो चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करें लोगों के सामने, तो हम लोग उसको रियल रखें, क्योंकि जो फील करते हैं, जो हम लोग बोलना चाहते हैं, और एकदम अच्छे से एक्सप्रेस करें, क्योंकि हिप हॉप इज ऑल अबाउट दैट. Like जो हम लोग हमारे सराउंडिंग्स में देखते हैं, what we see around us daily on the daily basis, मतलब सुबह उठ के हम क्या देख रहे हैं, फिर शाम को हम क्या देख रहे हैं, हमारे एरिया में क्या हो रहा है, what we are living like. तो और इंडिया में क्योंकि लाइफ बहुत अलग है और मुंबई में तो काफ़ी ज़्यादा अलग है. नो वन स्टॉप्स फॉर एनीवन हियर, तो वो सब भी देखना पड़ता है. मतलब हाँ, वहाँ से ही सब कुछ इंस्पायर है कि they were also talking about their life there and we are talking about ours. One of the things, of course, that surprises me, quite frankly, is I don't think it was until Gully Boy came out, quite frankly, that people really woke up to this hip hop scene that was happening in India and Bombay. And quite frankly, I was taken a bit by surprise, and maybe it's because I don't live in India that I was shocked that this existed. How long has this scene existed, and when was the first time you started to feel as though you were starting to get recognition yourselves? हमने जिनको देख के सीखा है ना, the people which we learned from, they were doing it like from 10 years, 11 years. तो सब ऐसा ही चल रहा था, मतलब सबको रैप करने का था वो टाइम पे. और फिर जब उसके बाद गली बॉय आया ना, तो सीन एकदम अलग तरीके से बिल्ड हो गया. और हम लोग ने जब स्टार्ट किया ना ये, तब हमारे लिए काफ़ी गेट्स खुल चुके थे इंडिया में, मतलब Yes. करने के लिए कि हमको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी. जैसे क्योंकि फिर हम लोग जब डिवाइन भाई के साथ गली गैंग पे साइन हुए, तो वो चीज़ ने हमको एक अलग प्लेटफॉर्म दे दिया. और अभी मास अपील आ चुका है इंडिया में और हर तरीके से पुश मिल रहा है हिप हॉप को, तो एक बहुत बेटर सीन होता ही जा रहा है. मतलब डे बाय डे सब कुछ सही होता जा रहा है हिप हॉप को लेके इंडिया में. Yeah, I was saying like before Gully Boy, आप boy, बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों के लिए नए डोर्स खुल चुके हैं. लाइक आफ्टर गली बॉय ऐसा हो चुका है कि इंडिया के हर एक कोने में देयर इज अ रैपर राइट नाउ. एंड खाली मुंबई दिल्ली ऐसा नहीं है, कि अभी पूरे इंडिया में सीन हो चुका है. Gully Boy Ayatha, I remember tuning into some reality television shows, and कोई rappers थे, कोई जो बहुत अच्छे थे, and some who actually don't really know how to rap. You know, there's a fine line. You know, there's some of the finest rappers in history, Tupac, Eminem. All of these rappers are true rappers, and then there's rappers who sort of just say stuff. You know, I mean, I hate to simplify it that way, but rapping is actually a very difficult art form to craft, and I think that people take it very lightly sometimes. मेरे ख्याल से yes, you are right. There are many rappers who's like too great, they are legend in the scene. We know them before we were born. They were like doing in this world, I think, too much rapping and all. But there are some people who do it for fun. I think they do it for the sake of I don't know. They want to show them that they are rich or something. If they have money, they start doing rapping. They don't know the syllables. They don't know how to rap and all. They don't know how to write. They pick a ghost writer and all. But they do. Yes, there are people. But I think it's good for the culture. That also,
that if you have the money and you want to do the rap and all, you go to studio, you book, you do your official music video and all. So the team is involving, hip hop is involving. It's somehow, it's good for rap, I think, but it's not good if we think of like that we don't like it, that they rap. We know that they talk shit. Some rappers that we don't like at all, but they do, and people watch it. So it's like it's growing also, and it's not growing also. It's on us. It's on people, I think. Hmm. And a rapper, an artist, always should be true to itself, true to the people, no fake and all. I think that's my point of view. जो भी बहुत सारे नए आर्टिस्ट जब रैप करना स्टार्ट करते हैं या उन लोगों को थोड़ा टाइम हो जाता है, तो वो लोग जितने भी बड़े आर्टिस्ट हो गए, जैसे यू हैव नेम्ड एमिनेम, टूपाक, जेजी, एवरीवन, दे आर ऑल माय आइडल्स. ओके, सो हम लोग जब उनको सुनते हैं तो वो लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्टार्ट करते हैं ना, वो लोग दे जस्ट गेट इन्फ्लुएंस, लाइक उन लोगों के स्टाइल से, उन लोगों के राइम से, उन लोगों के फ्लो से, दे जस्ट गेट इन्फ्लुएंस. दे डोंट नो कि वो लोग जो कर रहे हैं वो उन लोगों का स्टाइल है, लाइक दे हैव गॉट दैट स्टाइल. सो वो लोग अपना स्टाइल ढूंढते नहीं. यस, ऑल अबाउट, उन लोगों को बस ऐसा लगता है कि लाइक वी विल जस्ट कॉपी देम एंड वी विल जस्ट डू देयर राइम्स, वी विल जस्ट थ्रो देयर वर्ड्स फ्रॉम हियर एंड देयर, लाइक इन एवरी वर्स. सो दैट डजंट वर्क राइट हियर. अभी का सीन ऐसा है ना, अभी लोगों को लिरिक्स चाहिए. हिप हॉप रैप में अभी लोगों को मेन, दे वांट बास, दे वांट टू लिसन बास राइट नाउ. एंड एट द सेम टाइम वो गाना कैची भी होना चाहिए, बिकॉज उसका जो बीट है इतना कैची रहना चाहिए कि लोग उसको जब सुनने तो लोगों को ऑटोमेटिकली वो बार बार रिपीट करने का मन करे. बिकॉज जब हम लोग लाइव परफॉर्मेंस करते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज हो जाता है, और जब भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जब whenever we make a record, it's a different thing, बिकॉज क्योंकि वो एक ऐसा परफॉर्मेंस रहता है अपना जो लाइफ टाइम के लिए वो सेव होने वाला है और लोग हमेशा कानों में सुनने वाले हैं. दैट इज ओनली वन काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जब भी अपन रिकॉर्ड करते हैं. सो वो भी बहुत मायने देता है कि हम लोग गाना कैसा बना रहे हैं, बिकॉज सब लोग रैप कर लेते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू मेक अ सॉन्ग. एंड दैट्स व्हाट, वो एक प्रॉब्लम है. लाइक जितने भी न्यू रैपर्स है, जितने भी लोग हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लाइक दे नो हाउ टू रैप बट दे डोंट नो हाउ टू मेक अ सॉन्ग. I want to ask you, we talked a little bit about Eminem and Tupac. The reason why I named them is because I grew up listening to them, and they're quite frankly my favorite rappers, probably. I'd like to show you something right now. I would like to show you something. Sure. It's written here where I'm sitting. It's Oh, written Eminem, yes. So yeah. Right now when I'm sitting, right now I'm sitting on my terrace and this is just behind my door. Eminem. And it's crazy, right? He has such worldwide appeal. One of the reasons why I really liked Eminem is something that he brought to the table. Of course, he raps very fast. But of course, I think one of the things that was fantastic about him is he rhymed words that didn't rhyme. Right? Like, he ended off his verses, and traditionally in rap, there's some sort of rhyme or rhythm, but he found a way to make words match that didn't actually initially match. If you just said them out loud, they wouldn't actually match, but the way he rapped actually matched and they would rhyme. Who are some of your musical inspirations and why? I will say for example, like you said for Eminem, like he does rhymes with another word, but it's not rhyming properly. But the way he's pronounced that, it sounds like it's rhyming. Most of the words is like that. And for me, my top 5 rappers are, one of them are Tech9, Jay-Z, Kendrick Lamar, Eminem, and list goes on. List just goes on, because there are a lot of rappers who have inspired me. And you said that about the fast rapping thing. Tech9 is my favorite rapper. He's the best chopper, I can say, and he's one of my favorite rapper. And I have grown up to his songs. Like when I was in 11th or 12th standard. From that time I am listening to him and I have been grown up on his song. मेरा मतलब वैसे मैं ज़्यादा इंटरनेशनल सुनता नहीं हूँ. मतलब मैं सुनना चालू किया हूँ इन लोग की वजह से, और इन लोग भी मेरे को सुनाते रहते हैं कुछ ना कुछ. बट मैं ज़्यादातर इंडियन और पंजाबी म्यूजिक ज़्यादा सुनता हूँ. बट मैं सुन रहा हूँ आजकल, और मतलब सुनते रह रहा हूँ सबको, जो मेरे प्लेलिस्ट में आ रहे हैं, इन लोग जो मेरे को सुनाते हैं. जैसे पॉप स्मोक हो गया, जो टूपाक, इन लोग के गाने मैं एल्बम्स अभी सुन रहा हूँ, मतलब काफ़ी सारे जितने एल्बम्स आए. क्योंकि मैं बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों से इंस्पायर हुआ, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ बाहर से नहीं. मैं तो बोलूँगा कि मैं स्लेज, फ्रेंजी और सैफान से भी इंस्पायर होता हूँ. तो आई विल से एमिनेम,
J Cole of course, Kendrick Lamar, और मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा UK का ड्रिल म्यूजिक सुन रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा. तो there's a young boy, he's called H, I think. He's dope. I'm listening to him right now. मैंने पहले I was in school, I think 9th or 10th, and the first time I heard rap, it was Indian, because my friend, there was my friend, we was studying in the school same time, so he was like rapping some things like in Hindi. That time, which song? I think Macy's and Divines, Bombay, and Afat. These two ये मेरा were Bombay. trending that time. Yes, Ye Mera Bombay and Afat. These two were trending that time. And I heard from his mouth, like, what you were saying, bro. मेरे को पता. So he was like, सुन सुन, and he was rapping in Hindi. And I was like, ये मतलब इतना fast कैसे होता है? मतलब ऐसा सब कैसे होता है? How is it like? So he was like, let me tell you some English words also. वो English rappers को भी सुनता था. तो उसने मेरे को तभी English में भी सुना. तो मैं ऐसा हो गया, it's like two languages, but they both are killing it because I can understand them. थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, English ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन थोड़ा बहुत. But the both languages are killing it. So I told my friends that I should write. मेरे को लिखने का है, मेरे को मन काफी कर रहा है. And they were like, if you are thinking so much and you want to, so you should. मतलब तेरे को एक try तो देना चाहिए. Also, if your first rap is whack, I think, अगर first rap तुम्हारा सही नहीं भी है, and your friends are like clapping it, like they are saying, let's do it, it's good. तो मेरे को लगता है कि तुमको करना चाहिए. और मैं खुद बोलता हूँ मेरा फर्स्ट रैप कैसा था, और अभी हम लोग ने 404 डाला है एंड स्टेज डाला है. लाइक वी आर गिविंग एन एल्बम विद द मास अपील, सो पीपल आर गोना हियर आवर न्यू म्यूजिक एंड वी आर मेकिंग न्यू म्यूजिक. तो मेरे को लगता है वी हैव टू ग्रो. मतलब छोटा सा रहता है, द प्लांट इज स्मॉल, इट विल ग्रो विद द ट्री. आई थिंक ऐसा ही सीन है. Oh, deep. आप एक दूसरे के साथ रैप बैटल करते हैं? लाइक वी आर फन टाइप, लेकिन कभी रैप बैटल ऑफिशियल मेरे को लगता है नहीं किया. मैंने तो नहीं किया. स्लेज ने किया भी है शायद. स्लेज No. I have किया है, पर लेकिन ऐसा कॉलेज फेस्ट फंक्शंस एंड ऑल. यस, कॉलेज फेस्ट में होते हैं ना, तो सो फॉर द कंपटीशन राउंड, सो ऐसा होता था कि लाइक फर्स्ट राउंड बैटल करो, सेकंड राउंड बैटल करो, एंड देन थर्ड वन इज फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस. सो ऐसा बैटल किया. आई थिंक सो सम्मोहित इज द परफेक्ट बैटलर. नहीं, we don't battle with each other, but we keep sharing ideas and we keep sharing bars with each other. Like Now we keep styling it. I'll tell, मतलब हाँ, भी हम लोग मस्ती बहुत करते हैं. जैसे मैं और स्लेज तो एक दूसरे को बहुत बोलते ही रहते हैं, सारा आपके थ्रू, राइम्स के थ्रू. मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं. और I have done battle rap like 2-3 times when I came into rap. Now I started writing songs. Besides, I was doing battles because there was a scene growing in Mumbai for battle rap also. People were doing that, just not in Mumbai, in different states also, like Delhi. They have there is a, I think, a page, they call it B3. They do a lot of battle raps on it. You can check that out. Our Bombay boys do that. And that's dope, I think. So yeah, I've done battle rap, और हम लोग आपस में भी करते हैं, लेकिन कभी-कभी. हाँ, मस्ती मजाक में. What do each one of you bring to the table? Obviously, आप rap करते हैं, lyrics भी लिखते हैं. I think one of you does the sound engineering as well. I think that's Sledge, who does the sound Sledge as well. And of course, Armin S, 404 सुन रही थी, and some of your other stuff that you've done. Frenzzy, of course, you bring some of the Punjabi vibe, which is nice. Because of course I've heard some Punjabi rap, but I don't think it's proper Punjabi rap necessarily. जो हम सुन रहे हैं mainstream level पर, वो Punjabi है, rap necessarily नहीं है. So it's nice to listen to that. What do each one of you bring to the table? What do each one of you bring to the table in terms of creative space? Sammohit, Sledge, Frenzzy, and Saifan. If you could say it in one word, something that somebody else brings that inspires you. Like we always try to be better from ourselves. Like competition खुद से भी है, and you know, rap is a sport. Like right, rap is a sport.
इट्स लाइक अ कंपटीशन. सो हम लोग आपस में हेल्दी कंपटीशन भी रखते हैं कि लाइक हम लोग आपस में भी एक दूसरे से खुद से बेहतर तो हम लोग अपने खुद से कर ही रहे हैं, और हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग एक दूसरे को भी ऐसा चैलेंज करें, एक दूसरे के साथ में हेल्दी कंपटीशन रखें. तो वो हमेशा आपस में ही वो चीज बेस्ट लेके आते हैं. तो वाइल वी आर मेकिंग अ सॉन्ग, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक ही जन हुक करे या कोई एक ही जन कुछ भी करे. इट्स लाइक नेचुरल प्रोसेस, लाइक जिसको आइडिया आया ही जस्ट गोज इन, ऐसा है. Nice, nice. Yes. Anything that you And Sledge ahead. is the one who always record us. Just like you said, that he's a sound engineer also. So he's the one who record us while we do our demos. We do every demo of every song at his house here only. So he's the one who records every one of us. He records himself also. And yeah, just like he told, everything is natural. मतलब मैंने कभी कोई हुक किया और मेरे से बेटर कि कोई हुक कर दिया सैफान ने या फ्रेंजी ने, तो हम वो हुक यूज़ कर लेते हैं. ऐसा ही होता है, मतलब एवरीथिंग इज नेचुरल. और कुछ ज़्यादा कोई ऐसा एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं लेके आता है, सिर्फ एक ही चीज़ की ऐसा ये मेरी तरफ से है. मतलब हम लोग कभी एक साथ में भी गाना बना रहे हैं ना, तो वी कीप इट लाइक दिस कि सिर्फ मैं और स्लेज एक गाने पे आ गए, सिर्फ फ्रेंजी और मैं एक गाने पे आ गए, सिर्फ सैफान और मैं एक गाने पे आ गए. तो वी कीप ब्रिंगिंग थिंग्स लाइक beats are always no one from us makes beats. We have producers, our friends who give us beats, and we try to do everything on that. Nice. Talk a little bit about wrapping it up with Error 404. बहुत अच्छा गाना है क्योंकि again it has a storyline which is important for me when I'm listening to a rap song. Somebody who's followed rap for years and years, उनको पता होना चाहिए कि रैप सॉन्ग में यूजुअली कोई ना कोई स्टोरी होती है. अगर एक रैप सुन रहे हो and it's just about money and cars and girls, it's not really rap because it's not infused with the hip-hop subculture. So tell me a little bit about Era 404, lyrics कैसे और idea कैसे आया था? So Error 404 है ना, ये ट्रैक है ना, it's about small difficulties we face in our lives. In every day, मतलब every day we face something new. Like मैंने ऐसा बोला है कि Error 404 जिंदगी मेरा ईयरफोन एक ही बजता. Like every time I buy a new earphone ना, एक साइड ना उसका खराब हो जाता है. और ये मेरे साथ बहुत हुआ है. मैं कितना भी अच्छा ईयरफोन लूँ, उसका एक साइड, और सिर्फ मेरे को ऐसा लगता है ना, this is not just with me, it can connect with a lot of people. Like तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा वो. तो that track is all about small difficulties we face. और उसका process तो ऐसा था ना, मतलब कि I had an idea कि I'll make a song Error 404 करके. तो I was just like, मेरे पास सिर्फ है ना उसका हुक था, सिर्फ 4 लाइन्स था मेरे पास उसका. तो हम लोग एक शो पर थे, हम चारों जन साथ में. वो शो डिवाइन भाई का था. तो उन्होंने हमको बुलाया था वहाँ पे. तो he told us like we have to perform 2 songs over there. So we only had 1 song that time in which we all were together. So we decided कि हमको 2 गाना कैसे भी करना है स्टेज पे, क्योंकि we only got 1 chance to do that because he gave us, and we never performed on a stage like that. It was big for us to do that there. तो हम लोगों ने प्लान किया ना कि हमारे पास दूसरा गाना तो है नहीं. तो we kept, मतलब हम लोग ने ना जो जैम करते थे ना हम लोग स्लेज के घर पे जब चलता था, हम जब जैमिंग सेशंस करते हैं, जब भी प्रैक्टिस एवरीथिंग वी डू, तो हम लोग एक बीट प्ले करते थे. इट वाज अ यूट्यूब बीट. आई स्टिल रिमेंबर इट्स नेम. इट वाज वाइट बाय स्लेज. वो किसका बीट था? Nico. YouTube producer called Nico. हाँ, it was his beat. So we kept jamming on it. We kept practicing on it. So that day ना we decided कि हम यही बीट पे स्टेज पे गाना करेंगे और एरर का हुक मार के एक वर्स कर देंगे, like randomly जो दिमाग में आ गया. So we made like हम लोग ने एक ऐसा सीक्वेंस बनाया कि पहले मैं जाऊँगा, फिर कौन जाएगा. हम लोग ने ये डिसाइड किया और एक बार में हम लोग ने वो दिमाग में रखा और हम लोग स्टेज पे चले गए. And I did that hook. So it became a song over there right on the stage. समझ रहे हो ना, मतलब वो गाना, yeah, because of the crowd we got a very beautiful reaction from the crowd, and everyone was like, they were jumping and the beat was too sick.
drop was too sick, so we decided to make a song like that. तो हम लोगों ने फिर पूरी beat change की, पूरे verses change किए, but the hook is same. That's a great story actually behind the song. Great story. It's been a pleasure speaking to all four of you. Before we leave off, Sledge, which basketball jersey are you wearing? Sorry, I didn't know. Can you please repeat? Basketball jersey. Which one are you wearing? Jersey. Yeah, I am wearing Chicago Bulls. Jordan 20. Of course. Okay. I was just wondering whose you were wearing because the Miami Heat also have similar colors and they were in the finals just recently. So I thought I would ask. All right, fantastic. You guys, thank you so much for chatting with me. Sammohit, Frenzzy, Saifan, and Sledge. It's been a pleasure speaking to you. It's been a pleasure talking to you a little bit about hip hop. Yeah, it was for us also. Thank you so much for calling us. So much. Thanks. All the very best. Good luck with everything you do, and please do stay in touch. I hope you understood everything we said in समझ Hindi. में मुझे समझ में सब कुछ आता है. Actually, I grew up speaking Hindi. मैं जब छोटी थी हिंदी बोलती थी. But जब हम न्यूयॉर्क आए थे तो सारे बोलते थे आप पंजाबी नहीं बोलते, आप हिंदी बोलते हो. कुछ तो पंजाबी में कुछ तो सुना है. हाँ, पंजाबी की बोल भी रही है. वो हिंदी में पंजाबी टच आ रहा है थोड़ा. मैं अपने माँ प्यो ना पंजाबी की बोल रही है ज्यादातर. बट हो जाता है कि जब हिंदी बोलनी होती है फिर my Hindi I sound like the Bollywood movies in which they show the NRI. हो जाता थोड़ा. Yeah, I try not to speak in Hindi too much because हाँ फिर वो आदत पड़ जाती है ना. हिंदी में दिक्कत होता है, थोड़ा दिक्कत होता है. पंजाबी में आराम से बोल लेती हैं इसीलिए. बड़ा चंगा. All right. Cam. Okay. Thank you so much. Lovely chatting with you so guys. Lots of fun and take care. Good luck. Yes. You too. Bye. Take care. Bye.